Hello guys. Today we'll see SOLAS, about SOLAS. So first of all, what is the full form of SOLAS? International Convention for the Safety of Life at Sea. International Convention for the Safety of Life at Sea. So currently, which is amended 1974. So as you can see here, adoption 1 November 1974, entry into force 25 May 1980. QIIA SOLAS. So the SOLAS Convention in its successive form is generally regarded as the most important of all international treaties concerning the safety of merchant ships. The first version was adopted in 1914 in response to the Titanic disaster, the second in 1929 and the third in 1948, fourth one is 1960. 1974 is the current version, includes the tacit acceptance procedure which provides that an amendment shall enter into force on a specified date unless before the date objection to the amendment are received from an agreed number of parties. So after this disaster, Titanic disaster, which has happened in 1913, and this come within 1 year, which is 1914. So if surveyor asks you uh, about which incident the SOLAS come into picture, so we can tell them after Titanic disaster, okay, which happened in 1930. So within 1 year, 1914, the International Convention for the Safety of Life at Sea come into force. Okay, 1974, which is the current. As a result, the 1974 convention has been updated and amended on numerous occasions. The convention in force today is sometimes referred to as SOLAS 1974 as amended. Okay. The main objective of SOLAS convention is to specify minimum standard for the construction equipment and operations of ships compatible with their safety. Flag states are responsible for ensuring that ships under their flag comply with its requirement, and a number of certificates are prescribed in the conventions as a proof that this has been done. Control provisions also allow contracting governments to inspect ships of other contracting states if there are clear grounds for believing that the ship and its equipment do not substantially comply with the requirement of the conventions. This procedure is known as port state control. So basically क्या है सोलार जो टाइटैनिक के बाद आया सो एक्चुअली ये डिजास्टर में क्यों उसके बाद क्यों आया है क्योंकि टाइटैनिक में सफिशिएंट लाइफ बोट नहीं थे जैसे उसका कंस्ट्रक्शन है जैसे सेफ्टी एज एन सेफ्टी के लिए अगर वो वहाँ पे प्रॉपर लाइफ बोट रहते तो बहुत लोगों की जान बचती सो दैट्स वाई ये जैसे इंसिडेंट होते हैं उसके बाद ही रेगुलेशंस आते हैं उसके बाद ही ऐसे 16 जैसे बुक्स आते हैं बड़े बड़े यू नो सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोलास कन्वेंशन इज टू स्पेसिफाई मिनिमम स्टैंडर्ड मतलब जितना कि मिनिमम हम लोग रख सकते हैं द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑपरेशंस ऑफ द शिप्स कंपैटिबल विद देयर सेफ्टी सेफ्टी कंपैटिबल रहना चाहिए इसके लिए so the current SOLAS convention includes articles setting out general obligations, amendment procedure, and so on, followed by annex divided into 14 chapters. So total 14 chapters here. We can see the first chapter is general provision. General provision में ऐसा है कि includes regulations concerning which include regulations concerning the survey of various types of ships and the issuing documents. मतलब यही है कि फर्स्ट में जो अपने शिप पे डॉक्यूमेंटेशन है जैसे काफ़ी सारे उसमें सर्टिफिकेट्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग ठीक है देन चैप्टर 2 में दो पार्ट है चैप्टर 2 1 एंड चैप्टर 2 2 सो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड पार्ट इज अबाउट एफएफए So first part में जैसे कि construction, subdivision and stability, machinery and electrical installation. The subdivision of passenger ships into watertight compartments must be such that after assumed a damage to the ship's hull, the vessel will remain afloat and stable requirement for watertight integrity and bilge pumping arrangement for passenger ships are also laid down as well as stability requirements for both passengers and cargo ships. Coal-based standards for oil tankers and bulk carriers were adopted in 2010, requiring new ships to be designed and constructed for a specified design life and to be safe and environmentally friendly.
in intact and specified damage conditions throughout their life. Under the regulations, ships should have adequate strength. ये यही बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वाइज जैसे पैसेंजर शिप है, अपना बल्क कैरियर है या फिर कंटेनर है, तो जैसे इनमें प्रोसीजर थोड़े कम रहेंगे सेफ्टी के वाइज, बट अगर आप ऑयल टैंकर देखोगे, केमिकल टैंकर या फिर गैस टैंकर, देन स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं सेफ्टी के। सो उसके कंस्ट्रक्शन जो है या फिर सब डिविजन स्टेबिलिटी, ये उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए, चैप्टर 2(1) के अकॉर्डिंग वो रहना चाहिए। सो हु इज द वन ऑल्सो आइडेंटिफाई मीन्स कौन इंस्पेक्ट करता है वेसल को, तो ये पीएससी, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था पोर्ट स्टेट कंट्रोल, ये कभी भी कर सकता है। इसके लिए पीएससी का इंस्पेक्शन कभी भी होता है, वो मोस्टली 3 महीने में ड्यू रहता है, बट कभी भी पीएससी जहाज पे आ सकता है इसके लिए। सो the second one you can go for fire protection, fire detection, and fire extinguishers, which is FFA only. So includes a detail of fire safety provision for all ships and specific measures for passenger ships, cargo ships, and tankers. They include the following principles: division of the ship into main and vertical zone by thermal and structural boundaries, separation of accommodation spaces, further reminder of the ship by thermal structure boundaries, restricted use of combustible material. अच्छा, ये सब है जो एफएफए के अकॉर्डिंग है। सो एफएफए के अकॉर्डिंग अपना जो भी शिप पे कुछ भी चीज रहे, वो कहीं ना कहीं मेंशन रहता है, वो कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाएगा वहां पे, क्योंकि विच विल बी more costly, more costlier, will be more costlier than. So third one, life saving appliances and arrangement, जैसा कि चैप्टर 2 में सेकंड वन एफएफए था, तो थर्ड वन इज अबाउट एलएसए। तो जो भी रिक्वायरमेंट एलएसए के अंडर आती है लाइफ सेविंग, जैसे कि लाइफ जैकेट है, लाइफ बोट है, the chapter includes requirements for life-saving appliances and arrangements, includes requirements for lifeboats, rescue boat, and life jackets according to type of ship. The International Life-Saving Appliances Code gives the specific technical requirements for LSA and is mandatory under Regulation 34, which states that all life-saving appliances and arrangements shall comply with the applicable requirements of the LSA code. सो द एलएसए का भी एक सेपरेट कोड है, आपने देखा रहेगा, जैसे कि उसके अंडर जैसे लाइफ जैकेट है या फिर लाइफ बोट है या फिर रेस्क्यू बोट है, सो इनकी भी स्पेसिफिकेशंस है, इनके भी कितना उसका डायामीटर रहना चाहिए, या फिर कितने देर तक वो पानी में रह सकेगा, या फिर हम लोग का क्या हम लोग कैसे उसको वियर कर सकेंगे, कितने मिनट में होना चाहिए, ये सब स्पेसिफिकेशन मैं आगे भी फॉरवर्ड करूंगा आगे के वीडियो में भी। But then chapter 4, radio communications. The chapter incorporates the Global Maritime Distress Safety System, GMDSS. All passenger ships and all cargo ships of 300 GRD and upwards on international voyages are required to carry equipment designed to improve the chances of rescue following an accident, including satellite, EPIRB, and SAT for the location of the ship or survival craft. So ये radio communication is basically GMDSS. Chapter 4. GMDSS में जैसे डिस्ट्रेस हुआ, ये सब चीजें जो आती है, जैसे सेपरेट GMDSS का हमारा कोर्स होता है, वो इसके अंडर आता है, ठीक है। नियर कोस्टल वेसल या फिर जैसे कि सैटेलाइट इन्होंने जैसे बताया EPIRB या फिर SAT। सो EPIRB का जैसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन, देन SAT सर्च एंड रेस्क्यू रेडार ट्रांसपॉन्डर, यहाँ से लोकेशन ऑफ द शिप का भी पता चलता है, लोकेशन जो शिप का लोकेशन है वो भी पता चलता है, तो आप फर्दर देख सकते हो EPIRB and SAT. Then the regulation in chapter 4 cover undertaking by contracting governments to provide radio communication services as well as ship requirements for carriage of radio communication equipment. The chapter is closely linked to the radio regulations of the International Telecommunication Union. शिप पे कितनी क्वांटिटी में रहने चाहिए हर एक इक्विपमेंट, उसका भी रेगुलेशन चैप्टर 4 में है, सो इसके वाइज वो कंप्लाई होना चाहिए, ठीक है। Then chapter 5, safety of navigation. The subject covered include the maintenance of meteorological services for ships, the ice patrol services, maintenance of search and rescue services. This chapter also includes the general obligation for master to proceed the assistance of those in distress
and for contracting governments to ensure that all ships shall be sufficiently and efficiently manned from a safety point of view. The chapter makes mandatory the carriage of voyage data recorded VDR and automatic ship identification system. So this chapter mainly for our navigation deck officers. So safety of navigation which covers the equipment, अपना जो भी equipment है शिप पे उसका requirement, वो जैसे कि VDR हुआ, AIS हुआ, काफी सारे equipment जो है उनका requirement इसके accordingly होता है, ठीक है, XD से safety of navigation के accordingly होता है. Then chapter 6 which is carriage of cargoes. The chapter covers all types of cargo except liquid and gases in bulk, which owing to their particular hazard to ships or person on board may require special precautions. The regulation include requirement for stowage and securing of cargo or cargo units. The chapter requires cargo ships carrying grain to comply with the International Grain Code. So carriage of cargo, cargoes क्या क्या carry कर सकते हैं, उसके लिए क्या precautions रहते हैं, major precautions या फिर special precautions owing to particular hazard, according to that hazard are described in this chapter. So chapter 6 which is carriage of cargoes. Then chapter 7 carriage of dangerous goods. Dangerous goods, you know all that IMDG code. The chapter requires carriage of dangerous goods to be in compliance with the relevant provisions of the International Maritime Dangerous Goods codes, which are in mostly packaged form, IMDG code. So then chapter 8 which is nuclear ships give the basic requirement of nuclear powered ship and is particularly concerned with radiation hazard. It refers to detailed and comprehensive code of safety of nuclear merchant ships, which was adopted by the IMO Assembly in 1981. So ये जो code है ये पूरा regarding nuclear ships है, so which was assembled in 1981. Then chapter 9 management for the safe operation of the ship. Management for the safe operation of the ship. The chapter makes mandatory the International Safety Management ISM code, which is also called the ISM code, which requires a safety management system to be established by the ship owner or any person who has assumed responsibility for the ship. ये सारी अपनी जो कंपनी की चेकलिस्ट है which is under the ISM code और इसका ऑडिट भी होता है. सो बेसिकली यही है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू ऐसे दिया है इन्होंने, जैसे द चैप्टर मेक्स मैंडेटरी द इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट आईएसएम कोड व्हिच रिक्वायर्स अ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द शिप ओनर और एनी पर्सन हु हैज अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द शिप, द कंपनी. हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिप पे, तो इसके लिए जैसे कि कंपनी के चेकलिस्ट रहते हैं वो पूरे इसके अंडर आते हैं. देन चैप्टर 10 सेफ्टी मेजर्स फॉर हाई स्पीड क्राफ्ट. The chapter makes mandatory the international code for the safety of high-speed craft. This is regarding to high-speed craft. Then 11.1 special measures to enhance maritime safety. हाँ ये जो है 11 में है, जैसे chapter 11.1 is for safety and 2 is for security. So the chapter clarifies requirements relating to authorization of recognized organization responsible for carrying out service and inspection on administration behalf, enhanced service, ship identification number scheme, and port state control on operational requirement. So जैसे कि शिप पे एक सेफ्टी ऑफिसर रहता है, चीफ ऑफिसर या फिर मास्टर, सो मोस्टली चीफ ऑफिसर ही रहते हैं, तो which is under this chapter 11.1 and responsibility of the safety officer. Then 11.2 which is security, then security officer भी रहता है. So the chapter ensures the International Ships and Port Facility Security Code regulation 1123 of the chapter ensures the International Ship and Port Facility Security Code ISPS code. So इसके लिए अलग से जो ISPS code है सिक्योरिटी हमारे जैसे लेवल रहते हैं 1 2 3. Part A of the code is mandatory and Part B contains guidance as to how the best to comply the mandatory requirements. ये ठीक है, ये जिस इस कोड में पूरा आता है ISPS कोड में, देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो करते हैं शिप पे. सो यही है इसमें सिक्योरिटी पार्ट इज इन 11.2. देन additional safety measures for bulk carriers. Then this 12 is for bulk carriers, structural requirements for bulk carriers over 150 meters in length. Then chapter 13 verification of compliance, which is new, verification of compliance which makes mandatory from 1 January 2016 the IMO member state audit scheme, and the chapter
14 safety measures for ships operating in polar waters. The chapter makes mandatory from 1 January 2017 the introduction part 1A, the National Code for Ship Operation in Polar Waters. So polar region के लिए है. Then amendments है. So last ये हो गए chapters. So chapter please make sure if you're going for oral at least name तो आपको याद रहने ही चाहिए क्योंकि this question is very important in for orals. Then amendments. The 1974 convention has been amended many times to keep it up to date. The history of SOLAS amendments adopted by the MSC are listed in MSC resolution. So updates जैसे आते हैं कुछ भी इसमें जैसे SOLAS में अपडेट आया तो अमेंडमेंट के थ्रू हमें वो शिप पे पता चलता है. ठीक है. थैंक यू सो मच.